हेलो एवरीवन लेक्चर नंबर 9 रे डिस्कशन करवा स्टेट एंड प्रूफ कॉची हार्डमार्ड थ्योरम। ओके तो चलते प्रथम तार स्टेटमेंट को डिस्कशन करवा। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्टेटमेंट हियर। इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of a power series, that is summation n is equal to 0 to infinity a n z to the power n is r। ओके तो सी कौन कौच कि ये जो पावर सीरीज मो पाखे अच्छी द पावर सीरीज दैट आई हैव समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z n ये पावर सीरीज रेडियस ऑफ r। then the series is absolutely convergent if z mod is less than r and divergence if z mod is greater than r. So the statement is very simple. I have a power series here whose radius of convergence is r. Then that series, the series, that means the power series, the given power series is absolutely convergent when z mod is less than r, right? And it divergence when z mod is greater than r. Okay, now moving towards the proof here. So the proof is saying that by definition of absolutely convergent of a series, the series that I have summation n equal to 0 to infinity a n z to the power n is absolutely convergent when the series summation n is equal to 0 to infinity a n z n ର mod is convergence। तो सी कहूँ कौन कि जितेबाला मो पाखे ये पावर सीरीजटा आब्सोल्युटली कन्वर्जेंट केतेबेले हम जितेबाला तार mod सी जो पावर सीरीज मो पाखे थिला ए एन आउ जेड टू द पावर एन तार mod सी कन्वर्ज कर। ओके ये बहुत सिंपल फॉर्मेट रे कहला कि मो पाखे जो भी ये पावर सीरीज अच्छी समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन ये आब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगापी हेले मो पाखे आर mod एटी कन्वर्जेंट हवा दरकार सी ताकू मैं इक्वेशन एटी 1 देइछि। ओके ओके तो नेक्स्ट टाइप को डिस्कशन करवा। सो द नेक्स्ट थिंग इज गिवन हियर नाउ बाय कॉची रूट टेस्ट ती आम सरला दिस वाज डन। ओके ती कौन कहला नाउ बाय कॉची रूट टेस्ट इफ ये जो मो पाखे थिला तार mod समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n ର mod इज कन्वर्जेंट ये कन्वर्जेंट सेतेबेले हबो व्हेन जेतेबेले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n टू द पावर 1 by n, राइट? आर mod रो 1 by n ता पावर जो 1 by n सी 1 ठारो एटी लेस देन हबो। ओके तो ये कहला सिंपल। So that is summation n is equal to 0 to infinity a n z to the power n ର mod is convergent। okay if limit n tends to infinity a n mod to the power 1 by n z less than 1। ओके तो ये देला एठी। सो ये कौन कहला देखंतु ये जो टर्मटा एठी मो पाखे देइछि आकु मो एटा अलग अलग करी भांगी देली गोटे ए एन टू द पावर ए एन को मॉड करिके तार पावर दे देली 1 बाय एन एंड एठी जो जेड टू द पावर एन थिला मो पाखे जेड टू द पावर एन रो मॉड 1 बाय एन। तो भावंतु ये जो एन आ 1 बाय एन अछि ये कटि जिवो ओनली केते रहइबो एठी 1 रहइबो, राइट? तो ये रहिला हमरो लेस देन 1। So we know that next कौन कहला we know that r is equals to radius of convergent r is equals to 1 by limit n tends to infinity a n ର mod to the power n, right? So it implies that यदि r ର वैल्यू एतिकी हैला ताहले हमको ये वैल्यूटा दरकार फाइंड आउट करिया दरकार जो डिनोमिनेटर जो वैल्यू अछि, राइट? तो तार वैल्यू केते हिजबो एपटे ये हिजबो 1 by n 1 by r हिजबो वैल्यू, ठीक अछि?
So it implies that summation n equal to 0 to infinity a n z to the power n ର mod is convergent if ये condition देला 1 by r z mod is less than 1. It implies that z mod is less than r. ओके तो absolutely एटी convergent कथा कहला. एबे आमे देखिबा divergent. तो divergence रो प्रोसेस मते सेम हबो. Here we calculate that summation n is equals to 0 to infinity a n z to the power n is absolutely convergent if z mod is less than r. राइट. तो ये आम कौन प्रमाण कले जो पावर सीरीज मो पाखे ये गिवेन पावर सीरीज थिला ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हैला एंड ये जो कंडीशन थिला z mod लेस देन r हियर वी हैव प्रूव्ड. सो ये कौन कहला सिमिलरली by using Cauchy's root test we can prove that the given power series is divergence is absolutely divergence if z mod is greater than r. The same condition में करि परिबा but in your exam it is not necessary to write both the condition here. Okay. तो आपनकर 7 मार्क रही पड़थिबो right 28 marks अपन 7 मार्क पड़थिबो. So it is not necessary, you just write the same thing as well as it is written here. तो आपन आउ थरे टिके म रिवीजन कर दउ जे टर्म टा. सो देखंतु मो पाखरे एटी थिला कोन गोटे पावर सीरीज देइथिला राइट. ये पावर सीरीज रा रेडियस थिला r. से कोन कहला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हबो जते बेले ये कंडीशन टा सैटिस्फाई करबा z mod लेस देन r हबो आ डाइवर्जेंस केते बेले हबो जते बेले ग्रेटर देन हबो. तो आमे प्रथमे ये कंडीशन टा को प्रूव करले राइट. आको प्रूव कर दे कि देन आ पई म सिमिलरली लिखि देली. तो ई आर जो प्रोसेस थिला प्रथमे कोन थिला ना आपन पाखरे जो भी पावर सीरीज गिवन थिला ताकू आमे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करिया पई हेले ताकू कोन कले ना सेम जिंस एटी जो लाइन थिला समेशन को बाहर रखी दे कि ए एन जेड टू द पावर एन रो जगह रे केवल मॉड लगे देले तो सी कन्वर्जेंट हबो. बाकी आपन को वर्ड फॉर्म रे आको मन रखिया पड़िबो. ओके. तो कोन लिखा है जी कोन तापर ये कंडीशन 1 लिखिला परे देन कॉची रूट टेस्ट एठी लगेले. ठीक अच्छे. तो जिते बेले ताकू आपन डाइवर्जेंस रे प्रूव करिवे तो आपन खाता रे कर दवाटा बेटर हबा. आई थिंक एग्जाम रे मो कहली नॉट नेसेसरी बट यू हैव टू राइट. ओके. आपन को लिखिले भी माने बहुत भलो एंड आपन को सेतले गारंटी आपन को 7 मार्क मिल जो मे बी के 5 मार्क दे दे पारे. ठीक अछि. सो डोंट टेक एनी रिस्क राइट. तो ये कन्वर्जेंट है. देन कॉची रूट टेस्ट ये अप्लाई कली. कॉची रूट टेस्ट ये कौन कली बस आमको ये टेस्ट करिया पड़ो कि ये ये 1 ठारो लेस देन होची. तो सिंपल जदि ये समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ये कन्वर्जेंट होची केतेबेले कंडीशन कहूची जेतेबेले आर पावर जो हबो 1 by n. ओके. तो कन्वर्जेंस पे मैं आपन कहितली जो फार्मूला थिला a n z टू द पावर n mod to the power 1 by n is less than 1. तो सिंपल सेठी कौन हेची ना ओनली से जो mod भितर जो ऑब्जेक्ट अछि हमर जो फंक्शन अछि ताको भांगी छि जे गोटे a n करछि आ गोटे z करछि राइट. गोटे a n to the power 1 by n करछि आ गोटे एटी केते कहिछि एटी z करछि बिकॉज़ z to the power गोटे n थिला आ एटी 1 by n ले सेठी केते गेला n by n एटी हे जिवो n by n हे गेले कोन कटि जिवो 1 हे जिवो राइट. तो ये आपन कर हे गेला z mod is less than 1. तेणु एठी जो रेडियस सेठी अछि हमर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तार वैल्यू केते अछि आर वैल्यू 1 by r अछि. कारण को कंडीशन ने यदि r हैला एति कि 1 by लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n टू द पावर 1 by n राइट. देन r वैल्यू एटी केते हबो 1 by r सहित समान हबो. ठीक अछि. तेणु 1 by r सहित समान हैला माने सो दिस मीन्स दैट it is absolutely convergent for the condition here 1 by r z mod is less than r. So this means that z mod is less than r. Okay. तो ये absolutely convergent हैला. divergence पे same condition एटी apply हैला. तो
तो कंडीशन ओनली लिखाई बट आप लिखिदेले चलो ठीक अच्छे। गोटे जिनस कौन करेंगे ना जो डाइभरजेन्स करेंगे तो जो आपंकर लेस देन अच्छे से आप ग्रेटर देन जब जमीती कि कौटी लिखे मुझे कहीदे ठीक अच्छे। तो ये देखु सिमिलारली देवे तो सिमिलारली पर बाकी सब सेम लिखे इज एब्सोल्युटली डाइभरजेंस कन्वर्जेंट टाइम कौन लिखे डाइभरजेंट इफ द सीरीज ए एन जेड टू द पावर एन मॉड सेम एज वेल एज रखिए कन्वर्जेंस जगह कौन लिखे डाइभरजेंस ओके ताकू देदेवे इक्वेशन 2 बुझीगला आपको रखिले देन तापर कौन लिखे ना बाय कॉची रूट टेस्ट मो पाखे ये वाला जो टर्म अच्छी बाय कॉची रूट टेस्ट समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n लेस देन जगह के ग्रेटर देन 1 देवे बुझिपारे ग्रेटर देन 1 देवे तापर एटी नेक्स्ट कौन लिखिए इट इम्प्लाइज दैट समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n mod is divergent here if limit n tends to infinity a n to the power 1 by n and z mod is greater than 1 okay. Next we know that r is equals to 1 by limit n tends to infinity a n mod to the power 1 by n right. So it implies that बाकी आप मत सेम रखिए यू हैव टू राइट द सेम थिंग राइट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n mod to the power 1 by n is equals to 1 by r. So it implies that the things that is the power series here a n z to the power n mod is divergent right if the condition if such condition satisfied okay. Here the sign change to the sign is replaced by a greater than ये अच्छी कौन लेस देन अच्छी तो ग्रेटर देन बस करेंगे दैट्स इट से लिखे hence you will write here we calculate that the given power series is absolutely divergent if for the following condition that is z mod is greater than r. Similarly by using Cauchy root test we can prove that तो भाई आपको लिखा दरकार नहीं किसी ओके तो जेहेतु आप प्रूव करदेवे तो आराम से किसी प्रॉब्लम ना हेन्स एमती लिखिदेवे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तापर जहाँ भी प्रूफ थी आप लिखिदेवे न लिखिले भी चढ़ेब नो प्रॉब्लम ऑन दैट. Now moving to the theorem number 2, very important theorem, that is state and prove Abel's theorem. Okay, so what the statement is saying about if a power series a n z to the power n, okay, this is a standard power series, right? Summation n is equals to 0 to infinity convergence to positive value, that is z0 is non-zero, then the convergence, then it converges absolutely for all z such that z mod is less than z0. तो ये आमको कौन कहला मैं आउथरे आपन क्लियर करी बुझे दूची. The statement is very confusing but very clear कि मैं आपन को एटा आपन कहि दूची. If a power series a n z to the power n converges to a particular value, okay, तो सी particular value पाई कहूची जोटी कि z0 0 हो नथिबो, okay, ताटो बड़ होथिबो, then it converges absolutely for all z, जो z रो जो भी वैल्यू अच्छी, such that सी कौन कहूची कि z रो mod हबो, ओके, तो ये जेहेतु जीरो हेलानी z0 कौन जीरो हेलानी, इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो तार जो mod हबो z0 रो तो सी z ठारो एटी ग्रेटर देन हबो, सी ए कंडीशन एटी आबेल्स थ्योरम कहउचंदी, राइट. तो ता डायग्राम देखंतु, एटी डायग्राम हेची,
So there is z0 inside the circle. एटी देखो z0 रो mod, तो z0 जो mod अच्छी ऊपर z0 ये ओके। तो चलते बर्तमान प्रूव करवा। ये प्रूफ लिखिदेवे टे प्रूफ लिखा है। वी नो दैट वी हैव आम पाखे कौन अच्छी जहाँ भी गिवन डेटा अच्छी ये प्रथम लिखे। सो सब थियोरम को कर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच थाए राइट। सो ये कौन लिखाई वी हैव समेसन n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी a n z टू द पावर n इज कन्वर्जेंट at z इज इक्वल टू z0 ओके। It implies that summation a n z 0 to the power n is convergent। तो सी कौन कहला देखो z जगह ये z 0 ना फर्स्ट ओके ताको रिप्लेस करला जेहेतु ये z इज इक्वल टू z0 देइछि ओके। से को पॉइंट रे देइछि ये फर्स्ट कौन कहला मो पाखरे जो गिवन पावर सीरीज अछि लेट मी क्लीन हियर। सो as we have the power series a n z to the power n is converges at point what z is equal to z0 as we have z here now replacing this z with z0। So here it implies that summation a n z 0 to the power n is convergent right। So as it is convergent let me write here again limit n tends to infinity a n z 0 to the power n equating this to 0 okay तो equate करिवे का सहित 0 करिवे because it converges right। And here the next thing we will write here that is a n z to the power n is convergent sequence okay। It implies that a n z 0 okay। So here as we have a n z n okay only z n is convergent as we have z is equal to z0 right। as we have z is equal to z0 so we can write here it implies that a n z 0 to the power n is bounded sequence okay। So this is bounded sequence। So there exists m belongs to r plus that means the positive real number okay such that a n z 0 to the power n mod is less than and equals to m okay for all n belongs to n it n कौन set of natural number right। So considering z mod is less than z0 so here we consider that a n z to the power n mod is equals to okay ताको अलग अलग करके लिखिए a n mod into z n mod okay right। तो ये a n mod and z n mod go बाकी a n mod as well as you can write here okay। But for z to the power n you will extra add that z0 to the power n again multiplying also dividing तो multiply करेंगे divide भी करेंगे ठीक अच्छे। सो दैट कि ये आपन यदि कैंसिल कर आपन को ये सेम वैल्यू आछी तो मो पाखे वैल्यू एटी केते आसिला फॉर दिस वन। सो आई विल हैव a n z 0 to the power n okay right। and for this one I can write here z by z0 okay to the power n that means whole to the power n। तो मुझे ये प्रॉपर्टीज थिला z n कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज थिला वी हैव डिस्कस्ड ओके। तो ये आमर z n बाई z 0 रो n ठीक अच्छे मुझे लिखिपारि ना नहीं कि z ओके आर अलग अलग मोड थिला ना तो ओवरऑल गोटे ये मोड करी लिखिपारि। तो ये आमर कौन थिला z n रो मोड बाई z 0 रो मोड थिला राइट। ताको तो मुझे गोटे मोड रखिली एंड आकु मध्य जो पावर n थिला एटी आ तळे n थिला ताको होल ब्रैकेट करी गोटे n एटी रखिली ओके। सो आज वी नो दैट a n z 0 to the power n the value is m here because हम एटी नेइचे ऑलरेडी आ वैल्यू को m नेइचे
right? Because as it is less than and equals to m, ये नहीं चाहिए हमें already, we have taken here, right? So replacing this one by m here, so it is less than equals to m into z mod divided by z0 mod whole to the power n for all natural numbers, right? Next to write here, that is, but summation m z mod by z0 to the power n is a gs with Cauchy Riemann equation, that is common ratio. That means, what is the common ratio here? Z mod by z0 mod is less than 1. So it is clearly we can write here z mod is less than z0, that is z0 z by z0 is less than 1. So this is, therefore m summation m z by z0 to the power n is convergent series. This is a convergent series. By the comparison test, we can write here summation a n z to the power n mod is convergent for this condition, the condition that is given in the statement here, z mod is less than z0. Hence, as we have discussed the condition and we have proved it by the following process, okay, so here we can write that the final statement, as it has given in the statement here, summation a n z n is absolutely converges for the given condition. तो ये कंडीशन को जेहेतु आम प्रूव कले, सो ये आम लिखला। तो देखो ये जो सिंपल स्टेटमेंट मुझे कहीदे आउ थे टिके, फॉर द Cauchy Riemann equation, that is एटी z by z0 z mod by z0 is less than 1. सो देखो ये लेस देन 1, दिस मीन्स कि आपको एमती लिखिपर कि z mod एंड ये जो z0 रो mod अच्छी ये जो 1 सहित मल्टीप्लाई होची, सो इट इज z by z0 सॉरी z mod इज लेस देन z0, बस कथा खत्म, ठीक अच्छे ना? तो ये satisfy कला, so satisfy कला, this means कि a n z to the power n is absolutely convergent for the given condition, right? So ये आपनकर खत्म है। तो ये देखो गोटे क्वेश्चन 4 अच्छी, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज. सो हियर आई हैव द क्वेश्चन summation 3 plus 4i to the power n zn. Okay, so now we can write an is equals to 3 plus 4i to the power n by applying the formula, that is limit n tends to infinity an to the power an mod to the power 1 by n is equals to limit n tends to infinity 3 plus 4i to the power n whole to the power 1 by n, right? Because we have the value, that is an is equals to 3 plus 4i to the power n. Okay, so by putting this value, so we can have n cancel out, will be cancel out, right? तो n अच्छी एंड एटी 1 by n अच्छी, तो ये आपन n by n हो, ओके, n by n है कि 1 हो, so that is limit n tends to infinity 3 plus 4i mod, right? So this is going to be limit n tends to infinity 3 square plus 4 square. Okay, so this one becomes limit n tends to infinity 9 plus 16, that is equal to 25, and this will equals to 5. Okay, so the radius is 5 here for the convergence, that is 3 plus 4i. We have the radius, that is 5 here. This is the radius of convergence. Okay, ROC. Okay, so in the next class we will discuss Cauchy
हार्डवर्ड थियरम ओके सेटा हार्डमोड थियरम थिला एटा हार्डवर्ड थियरम ये दीटा कंडीशन एटी भी मध्य शो करूची ये तीनटा कंडीशन सो दिस इज द थ्री कंडीशन एंड ये बहुत बड़ लॉन्ग क्वेश्चन टा ओके डेफिनेटली जदि एग्जाम रे आसे सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम बट आई विश कि आपण पाखे ये दीटा फास्ट दीटा कंडीशन पकई ये कन्वर्जेंस कथा कहूँ एंड ये डाइवर्जेंस कथा कहूँ ओके तो आप भावुवे सर आप डिस्कसन कले कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट अलग तो जो भी स्टेटमेंट पड़ो आप अकॉर्डिंगली करा पड़ो ओके तो भावार किसी ना तो ता स्टेटमेंट अलग थिला आ स्टेटमेंट अलग थिला सी भी बस सेम कंडीशन कहूला बट आप देखिए ये जो कंडीशन एक्स्ट्रा देती ओके 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू इनफिनिटी आपको ये टाइप एक्जाक्टली देथिबो आपको ये भी सब लिखी तो आप क्वेश्चन एटा ही करेंगे ओके बाकी आर एक्सप्लेनेशन भी पूरा अलग पूरा डिफरेंट एकदम बुझेला आर एक्सप्लेनेशन पूरा डिफरेंट एकदम तो वी विल डिस्कस दिस इम्पोर्टेंट थियरम इन द नेक्स्ट वीडियो ओके तो आपको जब एग्जाम रे एमती पचार कची हार्डवर्ड थियरम आप प्रथम यहीटा को लिखा ट्राए करेंगे ओके तो ये आपको जब हार्डवर्ड थियरम पचार कची हार्डवर्ड थियरम तो आप यहाँ लिखिए बट मैक्सिमम टाइम देयर इज 99% चांसेस कि आपन को ये स्टेटमेंट ही डायरेक्ट पकई तो इट इज़ क्वाइट इजी फॉर यू राइट थैंक यू।